Hello everyone, this is class 7th, chapter 2. How do animals take food? In this chapter, we will discuss classification of animals based on their food habits, holozoic nutrition, nutrition in amoeba, digestion in human beings, and nutrition in grass-eating animals. In previous chapter, you have learned that green plants are the primary sources of food for all living organisms on earth. Chlorophyll, present in green leaves, traps the solar energy and converts it into chemical energy, which is stored as a starch. आपने फर्स्ट चैप्टर में लर्न किया था कि जो प्लांट होते हैं वो हमारे प्राइमरी सोर्सेज होते हैं. दीज ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो सन की सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसमें केमिकल एनर्जीज में चेंज कर देते हैं और वो स्टार्च के फॉर्म में उसमें स्टोर होते हैं. अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट, animals are classified into following types like herbivores, carnivores, omnivores. Herbivorous animals are those which eat plants. Example, cow and dog, deer, etc. Carnivores, the animal which eat flesh of the other animals like lion, tiger, etc. Omnivores, those animals which eat both plant and meat like human being and crow, etc. The component of food animals eat such as carbohydrate, fat and proteins are complex solid organic matter. These are changed into simple soluble form so that they can easily absorb in the body and provide nutrition. मीन्स जितने भी जो कंपोनेंट फूड एनिमल कंपोनेंट फूड होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन वो फूड में प्रेजेंट होते हैं. दीज ऑल आर कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड. जो ये सॉलिड फूड होते हैं ये सिंपल सॉल्युबल में चेंज हो जाते हैं जिसको कि जो बॉडी है वो इजीली उसको एब्जॉर्व कर लेता है और उससे फिर न्यूट्रिशन लेता है फूड से. द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ रेडीमेड सॉलिड और लिक्विड ऑर्गेनिक फूड इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है उसको रेडीमेड सॉलिड और लिक्विड ऑर्गेनिक फूड होता है उसी को दिस इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. इन होलोजोइक न्यूट्रिशन इट इन्वॉल्व्स 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. Ingestion, process of taking in food. Digestion, in this breakdown of complex organic food into simple soluble forms. Absorption, taking in the soluble nutrition by the बॉडी सेल्स के थ्रू जब जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट को हम लेते हैं दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. एसिमिलेशन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी सेल्स. इजेशन, द अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट विच इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, दिस इज इजेशन. Now there are different type of animals and there are having a different ingestion food in different animals, different ingestion ways of the food in the different animal. different animal में different ways होता है food को ingestion के लिए. जो method होता है वो different होता है different animal में. First, amoeba which engulf particle by the projecting out. This is called false food and it is also called pseudopodia. Means pseudopodia के through
अमीबा अपने फूड को एंगल्फ करता है. पैरामीशियम. In paramecium, it sweeps the food particle by the cilia. In Hydra entangled. It take aquatic animals by the tentacles. They are having a tentacle by which they entangle the small aquatic animals. In mosquito and butterfly suck blood or nectar by the mouth parts. This is called feeding tube. And in frog have a sticky tongue to catch the prey. Duck having a holes in a beak. In human beings use fingers and hands to take food into the mouth cavity. In amoeba, they are having a holozoic nutrition because they are having its mode of nutrition is holozoic, which involve the steps of 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Ingestion in amoeba. By the pseudopodia, it engulfs the prey, and after ingestion, it digests the food inside the food vacuole. Food digests and it breaks down simpler substances from the complex substance by the digestive enzymes. Now, absorption and assimilation. Digested food diffused into the cytoplasm where it is utilized. Now, egestion in the amoeba. In egestion, the undigested food is expelled out from the hinder part of the body. From the hinder part of the body, the waste or undigested food is expelled out from the body. Now, the enzymes. Enzymes are the chemical substance which help in the breakdown of the complex food into the simpler food, which is secreted by the different glands which is present in the body, which is present in the digestive system in the human body. They are having an alimentary canal. The digestive system of human being consists of the alimentary canal and digestive gland. In alimentary canal, it consists of the following parts like mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum. And the digestive juice, which secrete different type of enzymes, and they are having a different glands: salivary gland, liver, pancreas. Now, come to the point: mouth cavity. Mouth is the opening of alimentary canal, from where food is taken in. They are having in the mouth tongue, teeth, and saliva. Teeth help in biting, chewing, and grinding the food. Tongue has taste buds which help us to taste the food of different tastes: sweet, sour, salty, and bitter. Saliva, which is secreted by the 3 pairs of salivary glands, which is poured into the mouth, and saliva moisten the food and lubricate it. That's why the food become easy to swallow. Teeth. Our teeth give the shape to our face.
टीथ हमारे फेस को शेप देते हैं. देयर आर ऑफ टू टाइप्स, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ आर 20 in number and these did not last long. ये बहुत टाइम तक नहीं रहते हैं. अराउंड द एज ऑफ 6 दे स्टार्ट फॉलिंग आउट. ये गिरने लग जाते हैं. जब हम 6 ईयर्स के होते हैं तो ये गिरने लग जाते हैं और उनके प्लेस पर परमानेंट टीथ आते हैं. दीज आर 32 in numbers. Types of teeth. Teeth are 4 types in an adult human. Incisor, canine, premolar, molar. Incisor are chisel shaped, which is for cutting and biting of food. They are 4 in number in upper jaw and 4 in number in lower jaw. Total incisor is 8. Canine. These are sharp and pointed, which is for tearing of food. 2 is upper jaw and 2 is lower jaw. Total canines are 4 in number. Premolars, which is flat and rigid, and they are having a small grooves, which is for cutting and cracking of food particles. In upper jaw it is 4 and lower jaw it is also 4. Total number of premolar 8. Molars, which is flat and wide in shape, these are for grinding and chewing of food. In upper jaw 6 and lower jaw also 6. Total number of molars are 12 in numbers. Now our mouth has salivary gland which secretes saliva. In saliva they are having enzymes which break down the insoluble starch into the sugar soluble. As we feel, हम फील करते हैं कि जब हम क्या खाते हैं, चपाती खाते हैं और ब्रेड खाते हैं, दैट इट स्लोली बिगिनस टू टेस्ट स्वीट. तब ये धीरे धीरे मीठी लगने लग जाती, स्वीट लगने लग जाती, बिकॉज द स्टार्च ऑफ चपाती इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू शुगर. जब हम चीविंग करते हैं तो सलाइवा के थ्रू, क्योंकि माउथ में सलाइवा होता है और सलाइवा के थ्रू जो चपाती का जो स्टार्च है वो शुगर में चेंज होने लग जाता है. इसीलिए हमें चपाती और ब्रेड चीविंग करते करते धीरे धीरे मीठी लगने लग जाती हैं. स्टार्च इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड टू शुगर इन द माउथ. माउथ में जो स्टार्च होता है, फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, वो धीरे धीरे शुगर में चेंज होने लग जाता है. द कम्बिनेशन एक्शन ऑफ टीथ एंड सलाइवा मेक्स फूड मॉइस्ट एंड सॉफ्ट सो दैट इट इज़ ईजी टू स्वेलो. जो टीथ और जो सलाइवा होते हैं वो दोनों फूड को क्या करते हैं, टीथ तो फूड को चीव करता है, छोटे छोटे पीसेस में करता है, और सलाइवा उसको मिक्स करता है. तो ये दोनों टीथ और सलाइवा फूड को मॉइस्ट करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, जिससे कि फूड स्वेलो करने में इजी होता है. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो I will explain rest of the part of the alimentary canal.